on the horrific rape and murder of the trainee doctor in Kolkata. We are now learning that the Central Bureau of Investigation has registered a corruption case against Sandeep Ghosh. The case has been re-registered after taking over relevant documents from SIT this morning. Remember, this development happened soon after the court had ordered for the SIT to submit those documents and transfer the entire case of financial irregularities over to the CBI. This is what we are learning from the CBI sources. In fact, Arunima joins us with more inputs. Arunima, first of all, do share with us if whatever you've learned from your sources in terms of what has been deduced by the SIT so far, the documents of which have been transferred to the CBI today. CBI was had by the SIT at Ram Palace office in Kolkata this morning, post which the CBI has. All right, we'll try and re-establish the phone line with Arunima, but this is the big development coming in, that the CBI has now registered this corruption case against Sandeep Ghosh. Remember, it's a re-registration of sorts, considering the SIT that was formed by the state government was handling, or rather probing, financial irregularities into RG Kar Medical College, of which Sandeep Ghosh was the principal of when that murder took place. And now we are learning that the CBI has taken over. The relevant documents have been submitted to the Central Bureau of Investigation by the SIT. That also includes all those documents that were related to the alleged financial irregularities at Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital. They have now been transferred to the Central Bureau of Investigation. Of course, as I was highlighting earlier, the Calcutta High Court had recently moved that entire investigation of the financial misconduct involving Ghosh from the SIT over to the CBI. Arunima is back with us on the phone line. Arunima, over to you. Am I audible, Akansha? Yes, now you are. All right. So SIT had handed over the relevant documents to CBI this morning at the Nizam Palace office. This was preliminary information that they had managed to collect about what is the discrepancy as far as financial matters at RG Kar were concerned. And now CBI, after the Kolkata High Court order, has re-registered an FIR under various sections of Prevention of Corruption Act, also on charges of criminal conspiracy, cheating, etc. This could mean more trouble for Sandeep Ghosh, because so far he was only being called by CBI for questioning in the destruction of evidence case as far as RG Kar rape and murder, bigger case or the primary case is concerned. But now with this PC Act case, and if you recall, Akhtar Ali has made some accusations as well. That matter has also been handed over to CBI by the Kolkata High Court. So the charges of financial impropriety in academic funds, financial impropriety in pandemic emergency fund, charges of buying high-flow nasal oxygen machines for 2 to 3 times the price and taking a cut out of it, allowing a cafeteria to run, flouting the rules and taking a cut out of that also. All of these are charges made against Sandeep Ghosh. Yes. CBI will look at the evidence and take a call if he should be called in for questioning or perhaps even arrest in that case as well. And having said that, now that Akhtar Ali's own allegations will also be probed by the CBI, will that not give CBI more advantage in terms of probing those financial irregularities as well? Yes, of course. I mean, SIT was looking at the matter, but Akhtar Ali provided more concrete evidence about where these financial improprieties were, exactly what are the sectors. So some of them are highlighted, others are disposal of biomedical waste, things like used gloves, syringes, even surgical masks, and that too at a time when COVID pandemic was hitting the country. So those are the charges Akhtar Ali has made. SIT was carrying out its own probe, and there was this, fear amongst doctors at RG Kar that considering, Sandeep Ghosh's clout, witnesses staff members who perhaps knew would not come forward and depose. But now with the central agency taking charge and the central agency having much more power under the PC Act, perhaps we will get to know exactly what was happening at RG Kar. Because, the rape and murder case aside, it's very clear that Sandeep Ghosh was indulging in something of error in that medical college and hospital. Right. Many thanks to you, Arunima, for bringing in all those latest inputs on this breaking story. And remember, CNN News 18 has been tracking those developments minute by minute from the ground. We have a battery of reporters, in fact, over there from News 18 as well. We bring you some reactions from ground. ये बताओ भाई कि ये संजय राय किस तरह का किरदार था? मैंने वो भैया क्या वो दारू पीने लेने के बाद न किसी को नहीं पहचानता था, कौन माँ है कौन बहन है, जिसका तिसका साथ कजेरा करता था
उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। क्या है, हम लोग काम से घर से फैमिली, हम लोग का बाल बच्चा है, यही चलाना, खाट के खाना होगा। और उसका साथ जो मैंने पूरा कचरा, बोलने से पूरा कचरा। किस तरह का कचरा, मतलब क्या क्या करता था? वही पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ, वैसी छिड़कानी फिरकानी करता। उसका साथ हम लोग बाती नहीं कर देते, आता तो भगा देते थे, हम लोग का पास मत रो। वो दारू पीता था, रात को कितना 2:30 बजे दारू पीते बियर लेके आया था, तो हम भी 2 घोट पी लिया था। बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था, छिड़कानी किया, मेरा क्या कर रहा? बोला हम पिलाया, हम खिलाया, तो हम ही को ही कर रहा। तो हम धक्का उक्का दे के उसको चल गया। हम बोला आइंदा से हमसे बात मत। क्या बोलता था अपने आप को, क्या बताता था? यहाँ रोप जमाता था क्या? वो हम लोग को तो रोप, देखिए भैया, हम लोग को कोई रोप वो जमा नहीं सकता। क्या है, उसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानते हैं, बायोडेटा। क्या बायोडेटा? थोड़ा बताओ ना, थोड़ा। अब तो जनता जानना चाहती है कि क्या वो ऐसी सबको भपकी देता था। हम पुलिस है, ये वो है, यहाँ का पुलिस पोस्टिंग हुआ, हम यहाँ का पुलिस बन गया, वो हो गया। ये बताइए भाई कि ये जो संजय रॉय है, कब से जानते हो इसको आप? ऐसे सर मेरा एज 30 ईयर हो गया है, तो 26 ईयर से जानते हो। 26 साल से जानते हो? कैसा व्यवहार में आदमी वो था सर, मतलब ऐसे नॉर्मल, जब वो ड्रिंक नहीं करके रहता था तो किसी से बात नहीं करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपना घर से आता था, सिगरेट पीता था, चल जाता। जब वो ड्रिंक कर लेता था, उसके बाद किसी की माँ बहन को वो माँ बहन नहीं समझता था। क्या करता था मतलब? बहुत दरिंदा था। हम लोग खुद देखे सर उसको। तो क्या वो मेंटली डिस्टर्ब लड़की के साथ क्या करता था? हाँ, वो एक बार क्या हुआ, वो लड़की यहाँ से जा रही थी, ठीक है, उसके छोटे बहन के पाँव में बाइक उठा दिया, वही जो पल्सर बाइक था उसका। अच्छा। ठीक है, तो वो बोली कि मेरा दवा करा दीजिए भैया, तो उसको गाली गलौज भी दे रहा था। अच्छा, छेड़खानी कर रहा था? जी। उसको बोल रहा था तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुमको ट्रोमा में लेके जाता हूँ। और ये सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर एकदम। कितनी, मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था, ऐसा समझिए। घर द्वार था? जी सर। और अपनी पत्नी बता रहे हैं 1 से ज्यादा शादी की थी, उनके साथ कैसा व्यवहार था? सर देखिए, हम रहते इस तरफ में, वो तरफ में रहता है। उसका वो शादी कब करता था ये सब हम लोगों को नहीं पता चलता था। वो जब वो अपना वाइफ को लेके निकलता था, तो फिर पता, एक लड़की भी है जो 12 साल का, जो पहले वाइफ है, वो 12 साल के आसपास में रहते हैं। हम लोग को जितना खबर मिला है, तो उसके एक लड़की है, वो नहीं आती है, ठीक है। तो फिर एक लड़की से शादी की थी, उसके साथ बहुत गंदा काम, मतलब प्राइवेट पार्ट में सिगरेट का छेका, बियर का बॉटल, मतलब आम सा बात था। अच्छा, ये सब करता था? इतनी बर्बरता? इतनी बर्बरता सर। तो महिलाओं को लेके उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, लड़कियों को लेके? बहुत गंदा था सर, बहुत गंदा था। अब मैं आपको बोल दे रहा हूँ, यहाँ से आप जी का घर जो है, वो जो ब्रिज उठ रहा है, वो क्रॉस करके जो बाएं तरफ से चेतला ढूक रहा है, वहाँ आप जाके ये लड़का का फोटो दिखाना, संजय रॉय का, उसको रेड लाइट एरिया का हर लड़की पहचानती होगी। ये बताओ कि क्या हुआ था, क्या करता था संदीप घोष, और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? There occurred a movement in 2021 demanding proper hostel accommodation, a democratically elected students body, transparent house staffship counseling, and it addressed some contemporary issues regarding ladies hostel. The movement was solely led by general students of RG Kar, and not a single political party were involved. We, the general students, went to then Principal Sandeep Ghosh, but he refused any kind of conversation. And students demanded immediate resignation of Sandeep Ghosh. When the movement came to an end, Sandeep Ghosh and his team, that is popularly known as North Bengal Lobby, the threat syndicate. Were the doctors there? There is a threat syndicate, of which Sandeep Ghosh is a part. The health syndicate comprises of Dr. Shamapada Das, Dr. Sushanto Rai, who is Vice President of West Bengal Medical Council. ये हाउस स्टाफ में होने के लिए कुछ पैसा लेता था, क्या ऐसा आरोप है? लास्ट 2 ईयर्स से आरजी कर पे हाउस स्टाफ मिलने के लिए फर्स्ट 2 मंथ्स का सैलरी और फर्स्ट 1 मंथ का सैलरी देना पड़ता था। मतलब 1 मंथ मतलब 3 मंथ 3